Hello and welcome to the 251st episode of IVM Likes. इस हफ्ते हमने दो बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिशियंस को अलविदा कहा. एक थे पंजाबी म्यूज़िक की आन बान और शान सिद्धू मूसेवाला और दूसरे थे हम सबके दिलों के किंग के सर. सिद्धू मूसेवाला के जितने भी गाने थे, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी फ्रेंड्स की गैदरिंग या लोगों का मिलना जुलना, पार्टी फंक्शंस जहाँ पे उनके गाने नहीं बजते थे. एंड टू सडनली नॉट हैव दैट वॉइस, टू नॉट हैव दैट एनर्जी अमंग अस इज लाइक feels like a void that can never be filled. And अगर के सर की बात की जाए तो a lot of people don't know that I and के sir belong from the same school. We go back to our schooling days. Obviously he graduated way before I even like entered this school, but we both share a name. We are called Marians that graduate from Mount St. Mary's, and we always say once a Marian forever. So this is me, Snayhil, a Marian, paying his respects to a fellow Marian who made all of us proud and won the world over with his voice. ये एपिसोड हमने इन घटनाओं के घटने से पहले रिकॉर्ड किया था और कोइंसिडेंस देखिए कि ये एपिसोड म्यूजिक पर है. दिस एपिसोड इज एवरीथिंग म्यूजिक. द म्यूजिक दैट वी हैव ग्रोन अप विद, द म्यूजिक दैट वी लिसन टू. आजकल हम कौन से गाने सुन रहे हैं, लास्ट कॉन्सर्ट हमने कौन सा अटेंड किया था, एंड बेसिकली हाउ म्यूजिक हैज बीन विद अस throughout our lives. So after this break, we'll be joined by my fellow colleagues and we'll talk everything music. I hope you enjoy this episode as much as we've enjoyed recording it. And Sidhu Moosewala and KK sir, you're always in our memories. And we are back from the break, and break के बाद we are joined by Nikhil and Zalak. हाय. हेलो. Zalak का एक्चुअली वेलकम बैक है. बहुत बड़ा वाला वेलकम बैक. So I'm coming here after a month. After a month? Yeah, last we did was the dating episode. ओह हाँ, उस टाइम पे अब्बास भाई नहीं थे. हाँ, मैं नहीं था. अब्बास भाई हमने डेटिंग पे एपिसोड किया था जिसपे हमने बताया था पॉडकास्ट क्या है पूरा. जिसपे हमने बताया था कि हमारी कितनी एपिक फेल्स हुई हैं डेट्स पे. That all comes to bite you back in the butt. I'm just letting you know. मतलब आज से It 2 does? साल बाद तो रिग्रेट करेगा. I shared really vulnerable secrets in that episode. Funny Just part, make sure it goes way down in the SEO and is not discoverable. भाई मेरी एक्स का मैसेज आया मेरे को, कहती जब हम साथ में थे तुम बम्बल पे थे क्या. Oh. मैं कहा ओह शिट, अबे कनाडा तक रीच है क्या. How I wish my podcast wasn't successful. Anyway, बहुत सटली तूने प्लग भी कर दिया कि your ex is in Canada now. ओह हाँ, Yeah. कोई उसके पास से जाएगा. मेरी बंदी Anyway, so वो epic date fails ना होते if we had good music to support our dates. The plug, dude. The plug. Wow, what a segue. Brilliant. Anyway, so इससे अभी तक पता लग गया कि हमारा आज का episode is about music, जो obviously आपने introduction में भी सुन ही लिया. So we'll be talking about good music that we've been listening to. And अच्छा, मेरे पास एक बहुत फनी स्टोरी अबाउट द म्यूजिक दैट आई लिसन टू द मोमेंट आई वेक अप. तो जब मैं छोटा था, एंड बहुत छोटा था, जब मम्मी तैयार करती थी स्कूल के लिए तब के टाइम पे, सो माय मॉम यूज्ड टू लाइक स्टार्ट द डे विद जगजीत सिंह का एक गाना था, हे राम हे राम. सडनली आई डोंट नो क्या मसल मेमोरी या कौन सी मेमोरी, इट हैज जस्ट brought back those times to me. and अभी जब मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, उठते ही I'm like Alexa play जगजीत सिंह का हे राम. पूरे लूप पे हे राम बजता रहता है for like good 10-15 minutes. This was my school's annual function song. तो annual function शुरू होने के पहले जो आधा घंटा टाइम पास होता है तब यही सॉन्ग बजता रहता था हर साल. इसके स्कूल का हाउस म्यूजिक हे राम. देखिए पेरेंट्स सीट ढूंढ रहे हैं और बैकग्राउंड में जगजीत सिंह बज रहा है. We can't shit on this song much though, पता है. We can't. Yes, we can't. The limited listenership we have, who knows? Oh, exactly. और कम हो गए तो. Anyway, Abbas bhai, is there any specific song that you wake up to? No, there isn't one. मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ in the morning, I am one of those people who wants absolute silence for at least 5-10 minutes. But मुझे याद है a couple of years ago,
When I was younger, when cell phones were new, तो उसमें अलार्म क्लॉक का गाना बजता था. तुम लोगों को याद है? Wake up, it's a brand new day. तो ना मुझे लगता था कि मैं अलार्म क्लॉक लगाऊंगा तो ऐसे सुबह सुबह ऐसे wake up, it's a brand new day ऐसे सुन के मतलब the day will start very well. बट नहीं होता था वो. आई जस्ट स्मैश द फोन ऑन दैट सिंगर्स वॉइस. भाई का सेल फोन उनको गुड मॉर्निंग बोल रहा है. और वो ना ये हो गया मतलब नाउ इफ आई लिसन टू दैट सॉन्ग इन एनीबॉडी एल्सेस फोन आल्सो तो मेरा पीटीएसडी होता है. बंद कर, मुझे सोना है 5 मिनट और. बट आई लिसन टू म्यूजिक ऑन द वे टू ऑफिस. सबसे पहले गाना कौन सा प्लग करते हो आप? जो भी पिछले रात का सुना हुआ होता है. क्या हम वो लास्ट नाइट आई वाज लिसनिंग इतने एम्बिगुअस आंसर. मैं अलार्म सुनता था एक्चुअली मेरा गाना. मैं बताता हूँ अभी रिसेंटली कौन सा था. तो ये थोड़ा स्पॉइलर है ऑफ द थिंग आई एम गोइंग टू रेकमेंड व्हिच इज टॉप गन मैवरिक. सो टॉप गन मैवरिक स्टार्ट्स विद अ सॉन्ग कॉल्ड डेंजर जोन. ओपनिंग क्रेडिट्स में वो गाना बजता है. तो nowadays that's the first song I listen to in the morning. That's also a very like fist pumping वाला danger zone. तुम क्या सुनते हो भाई निखिल? हाँ, so ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है for which I wake up to, but something that Abbas said I completely agree with. जो भी लास्ट नाइट का बजा हुआ रहता है. So Spotify has this thing called auto recommendations, right? जिसमें एक पॉइंट के बाद प्लेलिस्ट खत्म हो जाती है और फिर वो अपना करने लगता है. So around last week I hit a very good sweet spot with the algorithm और अब वो जो recommendations कर रहा है बहुत सही कर रहा है. तो मैंने एक हफ्ते से फोन में Spotify बंद नहीं करा है. मेरा Spotify रनिंग ऐप चल रहा है 24/7 because I am too scared. मैं बंद कर दूंगा और वो रिफ्रेश कर देगा पूरा से. अच्छा, तुम जब आ रही होती हो ऑफिस कौन सा गाना सुनते हो? So for me, as soon as I wake up in the morning, there's some or the other song that's playing in my head just randomly. And आज ब्राउन रंग बज रहा था यो हनी सिंह का. तो Do you think there is a correlation between the dream you dream and then you wake up? It not at all, sparks. not at all. I had a very like kind of like a horror dream. Oh. So I don't think brown rang relates to that. स्ट्रेंजर थिंग्स देख के सोए थे? नहीं भाई मेरी फट रही है. मैं जब से स्ट्रेंजर थिंग्स देख के काफी सो रहा हूँ डरावना ना है. भाई, हाँ. वियर्ड सा ही हो रहा है. एनीवे भाई एक्चुअली स्ट्रेंजर थिंग्स से मेरे को एक बात याद है. सो स्ट्रेंजर थिंग्स में दिस गर्ल मैक्स जो वो गाना सुन रही है अपने वॉकमैन में, हाँ. वो गाना अब आईट्यून्स के चार्ट पे वापस टॉप कर गया. Oh, nice. अब दोबारा से सबको क्या केट बुश शी इज लाइक My God, you never heard that name before, right? Kate Bush was like a big deal in the 80s and 90s. क्लियरली इतनी बिग डील था. But yeah. यार मैंने रिसेंटली एमिनेम और मशीन गन केली ने एक दूसरे को डिस किया था, याद है वो टाइम उनका बीफ जो था, जिसके बाद अपना एक इंडी बीफ भी हुआ था रफ्तार और एमिनेम का. तो रिसेंटली लाइक मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं पहले पूरी शिद्दत से MGK का रैप डेविल सुनता हूँ कि ओ ये एमिनेम को गाली दे रहा है. फिर मैं सुनता हूँ एमिनेम कितना बैडएस है, इसने उसको वापस कितना बढ़िया गालियां दिया. पूरा ऐसा सीक्वेंस में. तो मेरा स्टार्ट होता है MGK का रैप डेविल, फिर मेरा आता है किल शॉट, फिर मैं एमिवे बनता है एवरी डे. हाँ, पिछले 4 दिन से तो यही चल रहा है. आपको कोई ऐसा बैड एस गाने याद है, मतलब जो आपको सुन के ऐसा लगा कि भाई She went from Amiway to Gulzar. Sorry, So I had a big metal phase for a good 7-8 years of my life. So I don't know how many of you know Ozzy Osbourne, the singer. I just know the name. You know the name. Heard Okay. of him. So Ozzy Osbourne के साथ जो गिटारिस्ट उसके एल्बम्स पे और जो टूर करता था, that guitarist has a band of his own called Black Label Society. Oh, I've heard this name. Yeah, so Black Label Society has a song called Suicide Messiah, which is a very macho and उसका तुम वीडियो भी देखोगे ना, so it's like a bunch of biker gangs riding on bikes, drinking beer with bandanas, wearing leather jackets. So मतलब वो testosterone 5 times increase हो जाता है वो गाना सुनने के बाद. So whenever I want to feel like manly, for lack of a better word, I listen to Suicide Messiah. गाने वैसे 2 गाने निकाले थे, एक था Easy और एक था Facts. So once he उसका जो नाइकी के साथ जब डील कोलैप्स कर गया, and then he went with Adidas, Yeezy, उन्होंने Adidas के साथ कोलैब में किया, चप्पलें बनाई.
वही तो है You're सर triggering him right now, Nikhil. At the end of the day. Triggering him. बहुत मेजर ट्रिगर था एनीवे सो उसने जब व्हेन फाइनली Yeezy विद Adidas वाज अ हिट हाँ. तो कान्ये ने गाना निकाला फैक्ट्स करके जिसका हुक इज Yeezy 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 just jumped over Jumpman and then Easy जो अभी उसने निकाला है it's a diss on Pete Davidson and मतलब like obviously we Obvious know reasons. कि Pete Davidson क्यों Yeah. he's like God made me survive that plane crash so that I could come back and beat Pete Davidson's ass. Snayhil, I'm sensing a theme here. You wake up in the morning, you hear to rap beefs, and then when you want to feel pumped up, you feel about a Kanye beating up Pete Davidson. भाई बीच में जो मम्बल रैप फेज आया था ना मेरा लाइक मैं सिर्फ ड्रेक सुनेगा फिर उसके बाद कान्ये वेस्ट एंड देन आई लिसन टू एमिनेम डिसिंग मम्बल रैपर्स मैं किस तरफ हूँ Why do you need a story arc in your music? Like, establishes a protagonist and then भाई ये बहुत ज्यादा establish हो गया कोई मारो अभी इसके आगे. अच्छा but some of Kanye's early songs are also quite pumped up, pumping Yeah. up. क्या बोलना चाहिए उसको? Like Gold Digger has a very like you know. very realistic vibes. I don't know, Snehil, your girlfriend in Canada would be able to. यार कान्ये वेस्ट का रिसेंटली मतलब जो उसने डोंडा एल्बम निकाली है एंड नाउ ही इज रिलीज डोंडा 2 Donda 2 भी आ गई. डोंडा 2 I did भी आ not know गई this. हाँ तो Okay. अब सो अगेन अब आई डोंट नो जीनियस है कि मेनियक है या बॉर्डर लाइन कुछ है हाँ. बट उसने कह रहा है कि मेरे गाने से स्पॉटिफाई क्यों पैसा कमाए इसलिए उसने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज ही नहीं किया उसने बोला है मेरा खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कुछ स्पीकर है Tidal. हाँ कह रहा है हाँ. उसी पे बजेगी डोंडा 2 हाँ, सिर्फ तो हाँ. जितने लोगों को डोंडा 2 सुननी है उनको वो खरीदना पड़ेगा Right. Crazy. इसलिए कोई नहीं सुन रहा डोंडा 2 अच्छा any major concerts that you've been to recently So I recently went to see Piyush Mishra's live. हाँ हम It's साथ ही called- गए थे हाँ जी. It's called Balli Mara. If you're wondering which was Snehil's recommendation couple of Recommendation, हाँ. episodes ago. हाँ. Yeah. So if you're wondering what it means, Balli Mara is the address where Mirza Ghalib used to live. So it's the name of the gully that he used to live in. So the reason that Piyush Mishra has taken this name is because he's from Delhi and it gives him a feeling of nostalgia. Or actually where he he's not belongs from to. Delhi he's from Gwalior but उन्होंने अपने थिएटर डेज Yeah. जो हैं वो सारे उन्होंने दिल्ली में NSD में बिताए NSD, हैं yes. तो इसलिए ही रिलेट्स टू मच टू दिल्ली एंड ही थिंक्स कि मिर्जा गालिब हमेशा जिंदा रहने चाहिए कॉन्वर्जेशंस में और बिकॉज ही ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन हु एंड व्हाट मिर्जा गालिब इज या वाज actually is he You just said he'll never die, he'll never forget him. Then questions whether तो दैट्स व्हाई उन्होंने अपने बैंड का नाम बली मारान रखा है हाँ. and it was an amazing experience यार first of all to see इतना बड़ा turnout Yeah. for a person like Piyush Mishra because you और by the way उसी दिन बीपरा का भी कॉन्सर्ट था मुंबई में Right. and उसके बावजूद to see a house full for a person like Piyush Mishra who is not out and out of Mainstream. Deep Rock हाँ, for that हाँ, matter right. हाँ? Yeah. ठीक But है different audience, right? And Piyush Different Mishra is a audience. legend. and I'm glad that this audience exists Yeah. Correct, yeah. मतलब लास्ट डे तक जब मेरे को सोल्ड आउट नहीं दिखा ना उस पे क्या कहते हैं बुक माई शो पे आई वाज लाइक यार कितने कैसे लोग हैं दे आर मिसिंग आउट ऑन लाइक यू नो पीयूष मिश्रा बट वहां पे जब गया एंड आई सॉ द टर्न आउट एंड आई सॉ हाउ एवरीवन वाज एंजॉयिंग एवरी वर्ड दैट ही वाज सेइंग इट वाज अमेजिंग There's this one concert that I attended pre-pandemic of this indie singer called Piyush Bhisekar. Okay. And me and my boyfriend were the only people in the audience. What? Yeah, and today he is opening for Lucky Ali. Sorry, I forgot his Oh, name. nice. Yeah. What happened in the pandemic that he got so famous? कोई उसके एक दो फेमस गाने बताओ तुम आओ बैठो बातें करें. It's one of my most favorite songs. It's a very And if chill it's song. just the two of you and your boyfriend, you're like, नहीं हम बात नहीं कर सकते. हम break करें. Sorry. So that no, was a then it bad became joke. like a private, intimate concert where it was Right. just us in the audience and he was playing for us. That's kind of sweet. Are you telling me since the pandemic is kind of things are opening up, you Yeah. haven't been to a So concert? I have been to a concert, but it was like a concert that happened in PVR. So a concert Oh, was okay. happening in Korea of a band that I follow. Okay. And they screened Yeah. it. Yeah, and they Oh, screened. Yeah, and they okay. screened it live. And it was a lot of fun. I danced, we screamed, shouted, sang, everything.
Okay, I've seen 2 shows recently which were a lot of fun. Again, I'm going to age myself, but just deal with it. So there's a Bangalore band called Thermal and a Quarter who came to play in Bombay, I think last month, if I'm not wrong, in April. You'll be hearing this episode in June, so it'll be 2 months ago. But they came to Powai at a venue whose name I'm forgetting, but you can like do a search online and find it. And सबसे best gigs वो होती है ना, so like, and this was the first gig I was going in 2 years, so I was now we are not used to crowded places, right? So I was like, क्या होगा, like, it'll be too crowded, but it was that perfect mix of not too empty, not too crowded. Yeah. It's like a select group of people. A lot of the audience were other musicians, so that again adds to it because they are appreciating the music more. Correct. And they played a nice long 2.5 hour set with covers and originals and everything. And so they play blues rock. So that was one. And I caught Indian Ocean at BKC Bandra Complex a couple of weeks ago. Na? Yes, I I have to say also, I've seen Indian Ocean twice before, once in Bangalore, once in Bandra, only at Bandra Fort. So as compared to those gigs, this wasn't as good. Also back then it was a different lineup. Now the lineup has changed. But यहाँ का मुझे थोड़ा stage भी, it was very low and on eye level, so I couldn't really see very well, and the sound was also okay. But all said and done, it was Indian Ocean. Out and out. So yeah, I mean, it will always be iconic to see them perform. So yeah, those 2 performances of late have been very आप लोग की memorable. कोई बेस्ट मेमोरी रही है कॉन्सर्ट की, लाइक कि मतलब वो मेमोरी जो अभी तक टॉप ना हुई हो एक कॉन्सर्ट अटेंड करने की? I don't think I'm a concert person in general. I hate crowds. I just can't do it. So in life, in total, I've attended like what I think 3 or 4 concerts. Okay. 5. Okay, maybe 5. राउंड ऑफ कर दिया. and you're counting the one which was only you. Okay. Yeah. And I'm also counting the PVR one. So apart from that, I've attended Local Train. I've attended NH7, Sulfafa and all of that thing. Yeah. And I've attended, there was one concert, my first concert actually. It was like a half and half concert of Divine and Guru Randhawa. Oh, nice. And the guy that I was dating at that time was a rapper. So he was into Divine and I was a lot into Guru Randhawa's song at that time. It was what, 2017 or ish. Right. So it was a perfect concert. Okay. यार मुझे जाना था ये वाला डिवाइन कॉन्सर्ट में, जा ही नहीं पाया, कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं जा Now it's too late, Snayhil. I would have told you to go with my ex, but he's not. What about you, Nikhil? So same. I'm not that big in terms of attending concerts. Too many people, man. You can barely hear what the artist is performing anyways. But yeah, sometimes like, especially the one that we went to, somehow the balance was maintained. I mean, we could first of all hear what he was saying and what he was singing because the crowd wasn't too loud, but at the same time it wasn't like a dead crowd which refuses to react anything whatsoever to what the artist is performing. So yeah, this was one of the finest concerts I've attended so far. Yeah. Again, I'm going to, since I have lived more than you people, I have seen more shows than you. Most memorable was my first ever rock concert. It was the Rolling Stones, which is a band which has been around since the 60s. It was my first ever rock concert. I saw them in Bombay at Brabourne Stadium, which is a cricket stadium, in 2003. Wow. And they were celebrating their 40th anniversary back then, and they're still playing. They're close to 60. Like the band is 60 years old now. So, bhai, matlab, the production, like they were the contemporaries of the Beatles. So you can imagine that they've played probably the most number of concerts ever. So they fly on their own private jet. The production quality, they had a freaking 20-piece orchestra with them on stage. Ooh. There was a huge LCD screen, which in 2003 was a big deal, right? Thing, yeah. And they had animations playing in sync with the songs as they're performing. They had GoPro cameras in 2003 on the neck of their guitar. So whenever you play the guitar, you would see it on the screen. You know? So that kind of scene, वो सब देख के दिमाग खराब हो रहा था हम लोगों का. And I was like 15 years old at that point of time. So I was like, man, this is amazing. And then I went to live in Bangalore where I saw Deep Purple, I saw Iron Maiden. I saw Iron Maiden. Yes, nice. Parikrama opened for Iron Maiden, which they were so impressed they took Parikrama with them to Download Festival. That I saw Aerosmith. So those Bangalore concerts were some of the best. So sorry guys, this is what happens when you live in a better time. वो 2003 में वो क्या कर रहे थे, हम कोई मिल गया बना.
वो सोच ली कि गिटार पे गोप्रो लगा देते हैं, बस हमारा जादू धूप खा रहा है. बस celebrating just being alive for a long period of time as though it's an achievement. Look at you, have been around for long. But for Indian bands, there used to be a club called Blue Frog in Bombay, which is now shut in Lower Parel. At Blue Frog, Advaita launched their second album. So they played the whole album in its entirety. Plus they played I think some 6-7 songs from their first album. Wow. So it was like a 3.5 hour concert, which was just fantastic. Nice. So yeah. यार मेरी अब तो ऐसा क्लीन स्वीप लग रहा है. अब क्या ही कॉन्सर्ट मेमोरी बताएं. सब छोड़ो, तुम बताओ 2003 में क्या कर रहे थे? भाई आई गेस बोले चूड़ियां पे डांस कर रहा हूँ भाई एट मैक्स. यार मैं 5 साल का था 2003 में ब्रो. वो कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे. मेरा बेस्ट कॉन्सर्ट मेमोरी इज न्यूक्लिया ब्रो. मतलब वो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कितना रिसेंट बता रहा हूँ. Oh dude, which reminds me, I've also attended Nuclear, I've attended Zayden. अब मुझे बस बाकी Yeah, concert yeah, memories. 8 कॉन्सर्ट्स हो गए. Even I've attended Nuclear. It was nice. ब्रो न्यूक्लिया की वेव आई थी यार एकदम से. तो न्यूक्लिया एक बार ना NSIC करके ग्राउंड NSCIS. नहीं, NSCIS. That's a show. NSIC NSCI. दिल्ली की बात कर रहा है. वर्ली. हाँ अरे मैं दिल्ली की बात अच्छा, कर रहा हूँ. ये कब बताएगा? स्टार्टिंग में बोला दिल्ली में एक ग्राउंड है. यार हम लोग को बॉम्बे के आगे दिखता ही नहीं. अरे The यार three of us are from Bombay. Exactly. All, wow. Bro, What Delhi place did you say? NISC? हमारी अल्फाबेट कॉपी करके नया बना दिया. जम्बल्ड What non-Bombay venue did you mention? What do you mean there are venues outside Mumbai? I didn't have seats. Sorry. I'm glad इस मैंने दिल्ली मुंबई टॉपिक आज के दिन के लिए नहीं रखा हुआ है. हाँ तो न्यूक्लियर. NS एक्चुअली वहाँ पे सीट्स नहीं थे. Dude, I'm saying this because he launched his album at NSCI only, so he actually has a history with वो that. दूसरा वहाँ पे उसने वो करी था तोता मैना. हाँ जी. Anyway, so वहाँ पे taking away the limelight from Mumbai and back to Delhi. तो वहाँ पे एक्चुअली बेइज्जती होने वाली है यार दिल्ली की स्टोरी में. तो वहाँ पे वो कॉन्सर्ट प्ले होने वाला था एंड वहाँ पे उसके कंसोल में कोई प्रॉब्लम आ गया एंड वो चिल्लाने लग गया उनके ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स थे एंड एवरीथिंग. सो जितना भी क्राउड आया था वो क्योंकि दिल्ली का क्राउड है वो बोर हो गए. कह रहे बाप नहीं सुनना. वो चले गए वहां से. और हम कुछ ढीठ लोग रुके रहे कि नहीं बजाएगा एकदम होपफुल. एंड देन वो इतना इरिटेट हो गया अपने ग्रीन रूम में बैठे बैठे वो स्टेज पे आ गया. तुम चाहे जितना भी टाइम लगे पर मैं बजाऊंगा. तो 1-1.5 घंटा उनका चलता रहा कंसोल ये वो. ही वाज डैम पिस्ड बट देन व्हेन फाइनली एवरीथिंग गॉट इनटू प्लेस he played for us and we were like good only 20-30 people. Wow. and he Nice. played. Wow. और हम लोग जितने भी अपन पीछे के उस स्टैंड्स में थे ठीक है. तो अब क्योंकि चले गए तो उसने सारे स्टैंड्स हटवा दिए एंड देन हम लोग एकदम आगे आके like 30 people enjoying a nuclear concert. Damn. कुछ ऐसा भी नहीं कि मतलब he's like you know 30 लोग हैं बस बजा देता हूँ क्या फर्क पड़ता है. फुल बैंगर विद ऑल दोज फायरवर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट. इट वाज एन अमेजिंग. ऐसा लग रहा था पर्सनल कॉन्सर्ट. हम लोग ने ऐसा न्यूक्लियर को हायर किया हमारी बर्थडे पार्टी के लिए. हमारे लिए आके बजा रहा है. Which reminds me, I'm sorry of another. One more. Oh, this is a revelation podcast. 9. Who's keeping My count? favorite one. 9. So there's this festival that used to happen in Ville Parle ka some college, and every year it was a thing that me and my best friend used to do. So the first year we attended, I think it was Ritviz who was playing, and we attended. Oh, I had attended 2 more Ritviz concerts. Shit, but I still hate concerts. Zalak has attended the most concerts here. Cross double figures. 10. We'll cross double figure. Yeah. Abbas, how do you feel about the fact that she's attended more concerts than you? I think I need to achieve a lot more in life. So wait, no. So Ritviz was playing, and the entire party turned into a neon party. So the people who were working in the fest, we were in like a rectangle kind of a shape, all the audience, and there were tables, right, on all sides. So all these people who were working the fest, they got up on the tables and they just started throwing neon colored water and paint on all of us.
It wasn't. And the first year How that we safe attended, was it? Huh? I have no idea. And घर जाके I rashes had हो रहे the सबको. most fun. Nahin, everything was okay. Everything was good. And the first year that we attended, we loved it, me and my best friend. And then it became a ritual till 3 years until the pandemic happened. Okay. भाई So then we pandemic- attended Zayden and Ritviz and Nuclear over there. पैंडेमिक खत्म होने के जस्ट बाद ना दिल्ली में हनी सिंह परफॉर्म करने आया था. ठीक है, एक बहुत ही प्राइवेट कॉन्सर्ट था जो इसमें सिर्फ जो लोग क्लब में एंट्री ले सकते हैं सिर्फ वही अटेंड कर सकते हैं. 3 लोग. छोटू सा क्लब. ठीक है, चुप. बहुत ऐसा प्यारा सा. Exclusive, हाँ. हाँ, ठीक है. और ऐसा मुंबई वो डुप्लेक्स टाइप क्लब है ना, तो बीच में से उन्होंने ऊपर से एक रेक्टेंगल. मुंबई का तेरा क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, मुंबई डुप्लेक्स. तो वो ऐसा एंड वी अटेंडेड और हनी सिंह आया हाँ. एंड ही इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली बाय द वे और कॉन्सर्ट वेस्ट दिल्ली में ही था एंड वो आया एंड आते ही वेस्ट दिल्ली आ गया. I'm like, भाई साहब कुछ मतलब तभी स्टीरियोटाइप्स है तेरे बारे में भी, दिल्ली के बारे में भी और वेस्ट दिल्ली के बारे में भी. कंसोल खराब ही ठीक था भाई, वो सही नहीं करना था. मैं पूरी फैमिली के साथ गया था, तो आई डोंट नो व्हाई. हनी Yeah, सिंह concert. exactly. Who does that? Yeah. सो माय मॉम पैंडेमिक खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं. Family concerts. Yani, Then Family concerts. अब पापा ने मना कर दिया, कह रहे नहीं हनी सिंह में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ. तो मैं, मम्मा, मेरी बहन, मेरा भाई, ठीक है, हम लोग कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट लाइन ही सेज इज दिस. एनीवे, अच्छा आप आजकल कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना के रखे हो गया आप? रिसेंटली जैसे वो स्पॉटिफाई ने एक फीचर दिया है ना कि आप एक ऐसा प्लेलिस्ट बना सकते हो जिसके अंदर अदर एंड यू कैन शेयर दैट प्लेलिस्ट विद समवन एंड दैट पर्सन कैन आल्सो ऐड सॉन्ग्स. यू कैन आल्सो ऐड सॉन्ग्स. हाँ जी. या सेम स्टोरी. गर्लफ्रेंड तो नहीं है भाई जिंदगी में, काफी ज्यादा, पर काफी ज्यादा अकेलापन, ऐसा कहना था आगे. मिस हो गया. आई कॉल इट अलग ट्रिप एंड आई हैव ऑल दोज 2010s के जो आइटम सॉन्ग्स हुआ करते थे ना, वो है उसमें. now here's the catch. I think I know why you don't have a girlfriend. Now here's the catch. They are written by either Gulzar or Vishal Bhardwaj or Javed Akhtar. Okay. Yeah, so आइटम सॉन्ग्स. yes. हाँ. Who do you भाई. think wrote Kajrare? कजरारे even It's written नमक by इसका. Gulzar. Yes. वो तो अच्छे गाने, वो हाँ, अच्छे आइटम exactly. नंबर्स So उस टाइप मैं के एकदम सारे. राखी सावंत पहुंच गया था ब्रो. तो नाचने तो- वाले तो राखी सावंत दी थी उसमें. I think that was his whole point कि मैं Okay, आइटम सॉन्ग yeah. बोलूंगा तो ये लोग सोचेंगे Okay, कि हाँ, फिर मैं हाँ, ट्विस्ट. Exactly. वो क्रेजी 4 का आइटम नंबर याद है राखी सावंत वाला? हाँ जी. Yes. मुझे नहीं याद भाई. मुझे भी याद नहीं. अरे आप लोग He was too old, I was too young. निखिल I remember Crazy for Ram Sampath sued the music director and he had to give a lot of money because Yes. उसने वही ट्यून किसी मोबाइल के एड में यूज की थी और वो गाने में भी थी. बढ़िया भाई. क्रेजी 4 में बाय द वे 3 आइटम नंबर थे, पता बाप रे. एक Which ऋतिक one? ने चौथा किया क्यों नहीं? फिल्म का नाम Crazy 4 है. तभी तो 3 रखे थे. 4 क्रेजी. 3 सेंसिबल. 4 क्रेजी, 5 टू मच. एक ऋतिक का था बाय द वे, एक Oh राखी God. सावंत का था. हाँ जी. Yes. एंड गेस तीसरा किसका था? तू चुप है, मलिका तूने तो शेरावत. देखा हुआ है. नहीं, अब्बास है. वाइल्ड गेस. Was it an item girl or an item boy? आइटम बॉय. अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ. वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स. शाहरुख खान. या हाँ जी. शाहरुख ने कौन सा गाना He दिया was in है? my mind. I wanted to say his शाहरुख name, but I did an didn't item know. number in Shah- Crazy 4. Yeah. He did one in काल. Yes. Yeah. काल में हम तुम तो करें करें. धमाल. Yes. वो भी आइटम सॉन्ग था. Yes. हाँ, ये Crazy इसमें for भी That भी was है. the phase जब शाहरुख खान आइटम नंबर्स करता था. कर रहा था. Oh my God. और बकायदा ऐसा नहीं कि मतलब पूरा स्टोरी में बैठता है ये आइटम अच्छा. नंबर. गाने के लिरिक्स है KRAZZY. अच्छा KRAZZY. Oh, now I remember. Just in case you weren't sure. Dude, इतना सब करके भी पिक्चर फ्लॉप हो गई. कोई नहीं भाई. डंकी. अलग ट्रिप. अलग ट्रिप. एक दो गाने बताओ उसके. So I have नमक इश्का, कजरारे. I have बीडी जलेले. बीडी जलेले, you remember? Omkara. Yeah. obviously. Again. Basha Basu. Yeah, again Gulzar. Gulzar. Vishal Bhardwaj was the musician, but Bipasha Basu. Basha Basu, bro. My everyday playlist is called Z's train playlist because I travel in the train. Ah, Oh, nice. nice. It's sponsored by And- Z Network. Z and Z. Zalak.
यार निखिल यार. I have the perfect amount of songs in there because not any song is repeated from the time I leave my house and reach the office. Oh, nice. And this is just coincidence, by the way. So what do you do about traffic then? I travel in the train. My go-to playlist is called a super awesome cheesy happy sad playlist. All emotions एक साथ. Which is essentially every song that I like in one playlist और मैं उसको shuffle पे डाल देता हूँ. Nice. So But based on don't you have like a mood? Because every morning I have a specific mood and I'm gonna listen to those songs only. No, so Abbas is so old that I let music dictate my mood. Lines blur हो गई हैं. so his playlist also works like radio. He doesn't get to pick what plays. No, so if I fight with my girlfriend and leave the house, then I will go for I have another playlist called Metal AF. So वो वाला playlist play करता हूँ. But that's the thing, because this playlist has music for every emotion. Yeah. I retrofit my emotion to the music. वैसे तो मैं खुश था बट अभी wake me up बच गया है तो रुको मुझे sad energy channelize But करना ये emo boy playlist मेरी भी है भाई. emo boy playlist है तुम्हारी? जैसे एकदम ही दिल एकदम टुकड़े टुकड़े ही हो जाए उसके बाद कुछ सुनने के लिए. ऐसी प्लेलिस्ट बनाई यार मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाई थी. सो जिस मतलब द गर्ल आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम शी मतलब वो इतना बीटल्स और ये सब नहीं सुनती थी. मतलब उसने सुने ही नहीं थे कभी. और मैं ना ऐसा शौक में लाइक क्या बीटल्स नहीं सुने कभी. तो मैंने उस टाइम के कुछ गाने बीटल्स के, क्वीन के, जैक्सन के, निर्वाणा के, इन सब की ना मिला के एक प्लेलिस्ट बना के उसके साथ शेयर करी थी. तूने प्लेलिस्ट में मैंसप्लेन किया है कि देखो ये प्लेलिस्ट सुनोगी तभी मेरे लायक बन सकोगे. नहीं फिर उसने मेरे साथ बहुत ही इंडी गानों की प्लेलिस्ट जिसमें राग वाग थे और ये सब वो सब अच्छा हेल्दी एक्सचेंज हुआ. हाँ. और फिर मैं शॉक में मैंने नहीं सुना. But has it ever happened to you guys where you've introduced music to your boyfriend or girlfriend and then you break up and then that artist becomes their favorite and they tell it to their friends and you want to be like भाई मैंने introduce करवाया था, इसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए. सर This guy बोल रहे हैं शब्द हमारे. This guy that I told you was a rapper that I used to date. For I think good 1 year I was also into rap, so I know my basics. I know all. I used to listen to rap a lot, right? After the breakup I continued listening to rap and पूरा म्यूजिक डिस्कार्ड कर दिया. yeah. मेरे प्लेलिस्ट में गजेंद्र वर्मा है ब्रो. इसमें तेरा घाटा वही वाला ना भाई. यू अच्छा आपको ये तो याद होगा. आई एम गेसिंग क्या वो गाना याद है बीच में एक एम्प्टीनेस करके गाना. अरे oh my god. अरे यार अब्बास भाई यार क्या है कुछ बता दो. अरे वो एक YouTube पे ना एक वीडियो वायरल हो गया था, ठीक है, कि जिसके How did the song go? So it was like emptiness. हाँ. Yeah. तो उसकी ना there's a better place. I'm not regretting not knowing this song. भाई उसकी ना एक स्टोरी थी बकायदा, ठीक है. वो गाना बजने से पहले ना जब वो पीछे गिटार का स्ट्रमिंग हो रहा होता था तो स्टोरी आती थी. 16 साल का एक लड़का था, उसको कैंसर था, बट वो एक लड़की को पसंद करता था. उसने उसको बताया, पर जब उस लड़की को पता लगा कि उसे कैंसर है उसने उसके बावजूद उसे छोड़ दिया और उसने उसकी याद में गाना लिखा है There's a better place than this emptiness. ये भाई इंग्लिश गाना था, एक पैरा इंग्लिश में. Not ringing any bells, but I will search it out. ये उस टाइम पे ये रोहन का गाना था जो वो 16 साल का लड़का था, है ना रोहन. ब्रो मेमोरी, ठीक है. फिर उसके बाद अब जब ये गाना है ना इसमें तेरा घाट, ये तो सुना ना. तो इसके बाद गजेंद्र और ना बोला अरे भाई वो मैं ही था. I was the Rohan and guess what, I'm alive. अच्छा मैं जब बड़ा हो रहा था तो मम्मी माइकल जैक्सन सुनती थी एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माइकल जैक्सन. सो मेरे दोस्त मुझे टीज करते थे, कहते तूने माइकल जैक्सन उसके मरने के बाद सुनना शुरू किया. तो बट दैट इज द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट माय मॉम इंट्रोड्यूस्ड मी टू, लाइक एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन. एंड मेरे मामू वाज इन अ बैंड तो वो ये सुनते थे एंड वो फिर मम्मी सुनती थी एंड फिर उसके बाद वो मैं सुन रहा हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई बहन बोले चूड़ियां सुन रहे हैं. couldn't keep the tradition on. Anyway, तो ऐसा कोई significant ऐसा म्यूजिक टेस्ट डेवलप करवाया क्या पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ कभी? So, jinx.
पॉडकास्ट पे जिंक्स कर दिया. My dad, since the time that I remember, he used to leave for work later in the afternoon, like post lunch. So subah he used to just chill or do his other work or whatever. And every morning he used to play old 90s, 80s, 70s, 60s songs. So I've literally grown up to listening to all of those songs for a good 4-5 hours of my life in the morning. So that's how I developed that taste, and that is, I think, a major part of what music I listen to, like old Hindi songs as well as old English songs. So we were talking about playlists, right? I also have a playlist called, so it's U alphabet, W alphabet and U alphabet. It's that emoji thing, right? गोविंदा याद आ गया. Which is all these old English classic songs, not classical songs, that I listen to, and whole mood, it makes my day. So same as her, my father is a big Rafi fan. He has like over 1,500 songs, some of which even many people haven't still heard. Yeah. There are undiscovered Rafi songs that just didn't take off as well as the others did. So I used to listen to that tape of his all the time. And then that I also have a similar story. A friend of mine had made a playlist for me. It's called Jazz and Blues, which has all the vintage Beatles, Queen, Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, which is a name we forgot to mention. Absolute legend. All of those songs. Nikhil is like, who is this? I'll tell you what, तुझे पता नहीं होगा Louis Armstrong कौन है, but so many music composers have ripped his music off. Yep. I've heard. तूने पल पल सुना है ना, मुन्ना भाई लग रहा हूँ मुन्ना भाई का पल. yes, That is ripped that's a off big from a one. Louis Yes. Armstrong Yes, song. it's a big Then one. there's a very popular song called What a Wonderful World. Oh, I Yeah, love yeah, that yeah. song. I That's love that. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैंने सुना है ये गाना, but I was just not able to put a face to the name. I think when we talk about our parents, we're talking about a similar generation. So, but for my parents, they were more fond of, they're very fond of till this day Urdu poetry. So they were more fans of lyricists. So Sahir Ludhianvi, Gulzar, they would, and back then, ghazal singers used to sing ghazals more of these Urdu poets than Bollywood used to be. Yeah. So more than like, even though my mom and dad still listen to like R.D. Burman and whatever, Jatin Lalit, Shankar Jaikishan, क्योंकि उनके टाइम का Bollywood music वही है, but there was always this soft corner of them for ghazals and for poetry. Yeah. जो आप जब छोटे होते हो, you don't appreciate that at all. Exactly. Right? So like, why are they playing this boring music in the car, or why do they want us to listen to? And they'll be like, नहीं बेटा सुनो ये culture है ये वो. And I'm like, नहीं, हम उस टाइम पे अनु मलिक सुनना होता था मुझे और मेरे friend को ये. So, and then at some point, like you mentioned, started the episode by saying that now you want to listen to that bhajan in the morning, because something clicks at some point where you start understanding what your parents wanted you to understand. So same thing has happened with me. Now I listen to ghazals. Now I listen more to Sufi music because I want to understand what the poetry was. And like you mentioned, some of this poetry is like we're talking about Ghalib. Some of this is hundreds of years old, and it's still carried on. Like you said, there was a sold out concert for Piyush Mishra, even though he's singing poetry which is from such a long time ago. So yeah, I mean, I still feel thankful that my parents have passed on. I still think I know 1% of what they know, because कभी-कभी तो ऐसा होता है, like my father is listening to the radio late at night और कोई गजल प्रोग्राम है, like 3 notes are played and my dad is like हाँ ये वो गजल है. मेरे को अभी भी कोरस तक पहुंचने के बाद होता है कि हाँ ये मैंने सुनी है, शायद ये वो है. But yeah, so I aspire for that now कि एक दिन मेरी भी नॉलेज पोएट्री की और गजल की इतनी हो कि मैं एक तानपुरा सुन के हाँ ये वो है. यार बीच में मेरा नुसरत फतेह अली खान फेज आया था. मैं पहले जहाँ काम करता था तो वहाँ पे नुसरत फतेह अली खान के 2 गाने सुनता था और मैं लोअर परेल से घर पहुंच जाता था. 30-30 मिनट के गाने, ठीक है. एंड देन जब सुनने शुरू करे थे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, तो लाइक अबे 35 मिनट का गाना, पागल है क्या भाई, क्या कर रहा है, ठीक है. एंड देन लाइक सुन तो सही. तो ही यूज्ड टू से कि यूट्यूब में नुसरत फतेह अली खान के गाने के बीच में ब्रेक डाल देना पाप है, ठीक है. एंड देन आई फील लाइक कि इतना क्या सेंटी हो रहा है. देन मैंने सुनना शुरू किया, फिर 1-2 ब्रेकअप बाद मुझे नुसरत फतेह अली खान समझ आना शुरू हुआ. लाइक एंड मतलब ऐसे पॉइंट्स आ गए थे कि मतलब मैं ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मैं गाना सुन रहा हूँ नुसरत फतेह अली खान का, उस फेज में चल रहा हूँ, अचानक चलाऊंगा वाह 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 वाह, मेरा फ्लैटमेट क्या हो गया.
मैं कहा भाई तू सुन क्या बोल दिया I क्या agree, I बोल agree, दिया dude. like, क्या बोल दिया मैं कहा अरे सादगी तो हमारी जरा देखिए bro. This I fully agree with, dude. So as I said, Dad used to listen to all those old songs. So first I used to get really annoyed कि ये क्या है, कौन से टाइम का गाना है, मेरे पैदा होने के पहले के गाने. Of late lyrics समझ में आने लगे उसके, और फिर वो ऐसा हो जाता है एकदम उफ. इनने फिलोसफी बता दी 4 लाइन में, एकदम ऐसा इल्यूमिनाटी लेवल शिट ब्रो. Yeah. So I was listening to that song from मेरा नाम जोकर, जो फिल्म आई थी राज कपूर की, उसमें वो जो गाना है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो 4 लाइन है भाई, पर वो कहाँ तक लेके चला जाता वो है, जिंदगी का सार हो जाता है भाई. बहुत खूबसूरत. ये पुराने गानों के ऊपर तो एक अलग से बिल्कुल एपिसोड कर सकते हैं. Nostalgia of 90s. Anyway, so we'll be back after this short break for some awesome recommendations. इस पूरे एपिसोड में एक्चुअली recommendations ही थी एक तरीके से. अगर आप एपिसोड सुनते हो, अगर आप वो 293 लोगों में से हो जो ये एपिसोड सुन रहे हैं, you will get a whole lot of recommendations, at least when it comes to music. But after this break, we'll be back हमारी ट्रेडिशनल recommendations के साथ. Yes. And we are back with some awesome recommendations. We'll start with Abbas. So I'm recommending a film that's playing in the theaters right now. It's called Topgun Maverick. It stars Tom Cruise. It's a sequel to the first Top Gun, which came out in 1986. But in case you have not seen that film, do not worry. जहाँ भी उस फिल्म के रेफरेंस की जरूरत होती है, वो बहुत बॉलीवुड वाली चीज देखते हैं, जहाँ पे टॉम क्रूज को फ्लैशबैक होता है और वो फर्स्ट फिल्म के सीन्स याद करता है. But it is simply put one of the best films I've seen in the last 3-4 years. It's so the first film was about Tom Cruise. आपने लक्ष्य देखी है ना? It was essentially the story of Laksh. This young fighter pilot joins the army and he has a rival in the army and they are always fighting with each other. And then in the end, spoiler alert, they come together and fight the common enemy. इस film में Tom Cruise is the teacher and he's dealing with a new batch of students. One of whom is the son of his ex wingman partner. And there is something that happened in the first film which I will not give away, which is a spoiler. So how does he train this new batch of recruits? Right. So they have to go on a mission which is impossible. This is not the plot of Mission Impossible, but it is a very impossible mission that they have to do. What makes this film special is कि आजकल जितनी भी big budget films होती हैं, चाहे Marvel हो, Transformers हो, जो भी हो, they have a lot of special effects in them. But this film, almost like 80% of the effects that they have done are in-camera effects, which means that Tom Cruise and the cast actually learned how to fly fighter planes. Practical effects. And sure enough, when they're in the air, in the shoot, of course, there are trainee pilots with them. But the way it's shot in the camera, it is very much real planes fighting, doing real dog fights in real mountains. And even on a personal like character level, it's a very good film. So, मतलब एकदम must time pass film है, 2.5 hours with a happy ending. I'm telling you straight away. So watch it. It's especially if you like Tom Cruise, because 86 के flashback में और 2022 के footage में वो एक ही जैसा दिख रहा है. So whatever he's doing in Scientology is working for him. But yeah, Top Gun Maverick, please watch it while it's in theaters. Yeah. Theaters near you. Yes. Nikhil. Hanji, so I'm recommending a Marathi film. It's called Jogwa. Since this episode is about music, that film has one of the greatest movie song albums that you will come across. You can take my word for this. It won the National Award for Best Film, and I think even the actors won the Best Actor National Award that year. The music is by the famous Ajay Atul, and it's just fantastic. There's one song in particular called Jeeva Rangala. It's by Hariharan. And it's mind-blowing. Just watch it. You can find it on Sony Live. I think it's for free. I'm pretty sure it's for free. You can check it out on Sony Live. Yeah. Zalak, I think it's for free. I'm pretty sure it's for free. Just making sure. Don't blame me later on. Don't quote me on this. Yes. Zalak, what will your recommendation so be? My recommendation is this Netflix collaboration with this app called Headspace, and they have a series on Netflix called Guide to Sleep. When I can't fall asleep, I basically listen to the episodes. They're good 20-minute episodes. I just play it and keep my phone aside, and I don't even realize when I fall asleep. It's very useful for me
for times when I can't sleep. In this case, watching asleep while Netflix is a good thing because that is the objective. अरे even I do this thing, but YouTube पे there's this video called Deep Sleep Music. Ooh. I listen to sleep stories on YouTube. मस्त I need something. 43 minutes का Yeah. एक पूरा ऑडियो है. कभी पूरा नहीं सुना मैंने. Same. I've never heard one episode start to end. Isn't that kind of the point? तो मतलब वही बता रहे हैं कि they work. Yeah, they're good. Anyway, so since nobody asked, my recommendation is Snayhil, what's your recommendation? thanks, Zalak. So since the episode was on music, I would like to recommend a movie called The Bohemian Rhapsody. Legendary बंदे के ऊपर एक legendary picture बनाई है. ठीक है. काफी लोगों ने उसको ऑस्कर जीता है वो इसलिए उस हाइप में देख ली या जो लोग एक्चुअली फ्रेडी मर्क्यूरी को फॉलो करते थे या उसके फैन थे उसके म्यूजिक के फैन थे उन लोगों ने देखी है. बट अगर आप लोगों ने कोई इफ एनी ऑफ द लिसनर्स हैज नॉट सीन दैट मूवी इट्स अ डेफिनेट वॉच. For sure. बेस्ट थिंग दैट they've done to the movie is कि जब वो मूवी प्ले कर रहे हैं और जब वहां पे कोई भी गाना आता है क्वींस का वो नीचे लिरिक्स डालते हैं. Yeah. Yes. So अगर if you enjoy the song and you don't know the lyrics to the song, you can still sing with them. Yeah. So they in an interview उन लोगों ने ये बात बोली थी कि उन्होंने deliberately किया so that they want every fan to enjoy every moment of the movie. Yeah, that's what happened when I went to watch it in the theater. I didn't know anybody else who was a fan of Queen at that time, so I went alone. Yeah. And there were more people over there who was just sitting alone. And we all started singing together. It was such Exactly. a nice thing. The same thing happened with me. Theaters में ये वाले मैंने मुंबई में देखी थी. ठीक है तो Better theaters. NSC है. कमाल ऑडियंस. मैं भी अकेले ही गया था एंड जैसे ही वहाँ गाने बजने शुरू हुए the entire theater started singing. Yeah. And all of a sudden I was not alone. I was watching a Yeah. movie with the entire theater. So I think it's a wonderful experience. Yeah. So anyone who has not watched it should watch it. It's also partly the Freddie Mercury magic, man. I mean, even the live concerts, if you watch the Yeah. taping of Live Aid, I mean, you can feel the energy that those Yeah, people are for feeling. sure. It's crazy. Yes. Legend, bruv. Legend. So that's been our recommendations and the episode. Yes. Thank you to all of you for joining and to the listeners for listening if you're listening till here. We'll be back next week with another awesome, amazing episode of IVM Likes. And till then, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.